अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप खैरियत से होंगे। इस सेशन में हम बेसिक आईओ इंटरफेसिंग के बारे में जानेंगे और ये चैप्टर 11 काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम इसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही कवर कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो है वो बेसिक की। ये सर्किट आपके सामने है, इससे मिलता जुलता एक सर्किट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मैंने ऐसे ही बनाया था। Okay, as you can see in this circuit, this circuit is attached to the data bus of microprocessor. So microprocessor is in this side. So the data bus is attached to this decoder, this IC, which we can identify. We have gone through it previously. It's a buffer IC. Okay, buffer IC means when it is selected, it just connect the input to the output. So because microprocessor is reading the data, so the direction is in this side, that this is the direction of the data. So from the direction of the data, we can identify that this is the input side. And also the switch location is in, and this is the outside for this buffer IC. Okay, so this is related to the buffer. Then we move toward, this is a switch. So this switch bank contains 8 switches which can be turned on and off. And here we have a resistor bank in which the resistors are attached to each switch. And we have a power supply. Resistor value is given 10K resistance. So whenever one switch become on, then the respective line become the ground, because we have a ground. This IC is always enabled, but remember there is a select control which is coming from the microprocessor. So this select line is coming from the microprocessor. So whenever microprocessor want to read the data from these switches, the condition of the switches, if a switch is on and off, then microprocessor issue the select control, which is a logic level to 0. Then this buffer become enabled, and whatever the logic level on the left side, it will appear on the right side. Then microprocessor can read it. So in one of our earlier lecture, we have gone through this, a very simple circuit, and it is used for the basic input interface. Basic input interface. Okay, if there is any question. No, sir. There is any question? क्वेश्चन आपके बाकी साथी कहाँ हैं? सर उनका पता नहीं सर। इतना तो एग्जाम आ जाएगा, फिर वो परेशान होने के लिए क्या हो गया? चलो सब क्या बोल सकते हैं सर। Okay, similarly we have the output. अगर मुमकिन हो तो एक दफा मुझसे जरा सर पूछ रहे थे कि अब तो हम इंशाल्लाह कल से हम माइक्रो कंट्रोलर का पार्ट शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो माइक्रो कंट्रोलर में कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करनी है इंटरफेसिंग के हवाले से और सिस्टम डिज़ाइन के हवाले से। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो हम कवर करना चाह
सारे टॉपिक्स वो इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर लेंगे. Okay, in this case we have the microprocessor on this side. The data bus is attached. Now the data direction is this side. And whenever microprocessor has to send the data, it select signal, control signal from the microprocessor, and then the data from in will appear on the outside. As you can see, this is a latch, so there is only a single pulse is generated by एक मिनट दीजिएगा. यही मसला होता है जब आपका मोबाइल आपके पास नहीं होता. Okay. Sorry. Okay, so we are talking about. So each LED is connected to the primarily power supply through a resistor, and whenever there is a logic level 0 on any of the input, that LED start glowing. As you can see, the resistance value is 330 ohms, which is much less than the 10 kilo ohms, which were attached to the basic input interface. So this is the basic output interface. But unfortunately, sometimes this LED does not glow properly. Then we need to have what is called a driver circuit or driver IC. Circuit. Sometimes we can just use a diode or a transistor as a driver circuit. But in some cases, like in the motor, for example, when we interfacing the motor, we need to have a driver IC. And similarly, for the case of LEDs arranged in the form of a 7-segment display, then we do need a converter or driver IC as well. For example, this is the 7-segment converter. And similarly, driver IC, so that the LEDs can glow in a desired intensity level. Okay, यहाँ कोई सवाल है आपके ज़हन में? जी सर, इसमें यही पूछा था कि इसमें सर एसटीबी कनेक्शन जो इसके होते हैं सर, वो कौन से होते हैं? क्या दोबारा? सर इसके जो एसटीबी कनेक्शन होते हैं सर, यानी कि वो पल्स कनेक्शन पे लाएंगे हमारे. जो एसटी तो स्विच होता है ना, पुश जो स्विच के कैटेगरीज हैं. हमने इससे पहले वाले सर्किट में ये पढ़ा ना. जी ये स्विच जो है ना स्लाइड है, ये स्लाइड करता है, ठीक है. लेकिन आप जिस स्विच की बात कर रहे हैं ना, कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये कीबोर्ड होता है ना, ऐसे होता है वो. इसके नीचे स्प्रिंग लगा होता है, और जब आप इसको पुश करते हैं एक दफा, तो ये बस कांटेक्ट करके फिर वापस आ जाता है, ठीक है ना. एक तो ये स्विच की टाइप है. एक स्विच की टाइप ये है कि जिसमें आप उसको कनेक्ट कर देते हैं. इसके ऊपर ऐसे एरो भी बना होता है छोटा सा, आप इसको जो है वो कनेक्ट करते हैं. बन नहीं पा रहा. एक छोटा सा एरो भी लगा होता है ताकि वो बताता है कि ये ऑन एंड ऑफ स्विच. तो एक तो ये है कि अब इनकी जो मैकेनिकल टर्मिनोलॉजी है, या ऑन, ये सिंपल ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है. और जबकि ये जो हमारे पास कीबोर्ड का बटन होता है ना, उसको हम प्रेस करते हैं और वो वापस आ जाता है.
ये इस तरह का स्विच है, ये सिंपल ऑन ऑफ स्विच है, ये लेकिन ये एक बैंक की सूरत में अरेंज है, ठीक है ना? सही से हाँ, वो जो आप पूछ रहे हैं ना वो फिर स्विचेस के आगे टाइप है। वो टाइप तो हम आमतौर पे जब सर्किट्स के बारे में बात करते हैं इन डेप्थ, उस वक्त हम स्विचेस के बारे में बताते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें हम इन स्विचेस वगैरह की बात करते हैं। इसमें तो सिंपल तो सर्किट हो गया आउटपुट का। अब इसके बाद हम चले जाएंगे कि ये जो इनपुट प्रॉब्लम्स होती है इनपुट साइड पे, और इनपुट साइड पे जो मेन प्रॉब्लम होती है मैकेनिकल स्विच की वजह से, वो कहलाती है बाउंसिंग। बाउंसिंग प्रॉब्लम, जैसे हम एक बॉल को नीचे फेंकते हैं वो बाउंस करता है। Okay, so in some application this bouncing is undesirable. So there are a number of a number of circuits which are available and used to remove this bouncing effect, और वो debouncing circuits कहलाते हैं। debouncing, ठीक है, देखिए यहाँ लिखो debouncing, ठीक है। अब आप SPST और SPSD की बात कर रहे थे, तो इसने SPST इसको कहा है, ये वाला जैसे, ये अब समझ में आ गया, ठीक है। सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, कितना मुश्किल है इन चीजों को याद रखना, बट इफ यू आर फेमिलियर एंड वर्किंग विद दीज टाइप ऑफ स्विचेस तो आपके लिए बहुत आसान है, इसको याद रखना। जब आपके पास एक छोटा सा शीट हो जिसपे ये लिखे हुए हो, आपने एक नजर डाली और आपको फौरन रिफ्रेश हो गया, वरना फिर रट्टा लगाते रहेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब जो ये अच्छे इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उनके पास एक छोटा सा वो बुकलेट और नोट्स टाइप एक चीज होती है, जहाँ वो अपने उनका वर्क बेंच होता है, वहां उन्होंने लगाया होता है, उसी पे ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है ना ये लिखी होती है, ताकि जो है ना वो उस टाइम में जब इनकी जरूरत पड़े तो फिर टाइम जाया ना। Okay, to avoid this bouncing effect, there are two type of debouncing circuits which are mentioned in this book. Okay, these debouncing circuits are based on the NAND gate, a combination of the NAND gate and also a combination of the simple NOT gate. Okay, NOT gate. और इन्वर्टर, हम इसको इन्वर्टर भी कहते हैं, और इसी तरीके से there is a NAND. So this setup primarily, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, but this primarily due to the nature of these gates, because they have their own power supply and ground, they primarily retain the desired level. जैसे ये नीचे टच होगा, टच होते ही फौरन चेंज कर लेंगे अपनी स्टेट, जैसे टच होगा फौरन अपनी स्टेट चेंज करेंगे, और इतना डिले आएगा जितना एक गेट का डिले होता है, और गेट का डिले आमतौर पे जो है वो नैनो सेकंड्स में होता है। शुरू में तो ये डिले ज्यादा होता है, जैसे माइक्रो सेकंड्स में, लेकिन ये अब जो है ये क्योंकि अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो ये नैनो सेकंड्स में चला गया। और माइक्रो कंप्यूटर जो है, आपको पता है कि कंप्यूटर जो है इसके अंदर जो जैसे लाइट में अगर कोई अचानक डिप या सर्ज आती है, तो इसमें जो जो क्वालिटी पावर है या इलेक्ट्रिसिटी है, वो उसकी बड़ी अहमियत होती है जब हम जो पावर सेंसिटिव डिवाइसेस जो हैं उनकी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें, तो इसमें जो सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं वहाँ एडिशनल सर्किटरी की जरूरत पड़ती है, और ये एडिशनल सर्किटरी डिपेंड करती है कि किस नॉन इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल।
क्योंकि ये इफेक्ट खत्म तो हो नहीं सकते। अब इन्वायरमेंट में से नॉइस कैसे खत्म करेंगे, लेकिन इनको कंट्रोल किया जा सकता है सो दैट दे कैन बी लिमिटेड फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन। एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एक एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड में आ जाए। और सबसे अच्छी चीज जो इनको मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो ऑसिलोस्कोप, क्योंकि ऑसिलोस्कोप से हम जो सिग्नल की वेरिएशन है वो चेक कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द डीबाउंसिंग। तो ये तो इनपुट साइड है, आउटपुट साइड पर ड्राइवर सर्किट देखना पड़ेगा। सो there are many driver circuits, but these two driver circuits are specifically mentioned in the book. One is based on a transistor, as you can say 2N2222. This is the transistor which is used along with the calculated values of the resistance. Similarly, here an inverter या जिसको हम नॉट गेट भी कहते हैं, नॉट गेट इज यूज्ड। और 7404 अगर आपने डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ा है तो उसके लैब एक्सपेरिमेंट में किया होगा ये एक्सपेरिमेंट। तो दिस गेट इज यूज्ड सो दैट ये जो डिजायर्ड वोल्टेज और करंट लेवल्स हैं, वोल्टेज तो ठीक है, वोल्टेज तो प्रोवाइड कर दिया आपने, लेकिन जो करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो खास तौर पे, क्योंकि एलईडी को ग्लो करने के लिए उसके अंदर से एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट जो है ना वो फ्लो करना जरूरी है अलॉन्ग विद द वोल्टेज। तो वोल्टेज अप्लाई किया उसके साथ साथ। और नीचे इसमें उसने कैलकुलेशन की भी बात की है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैलकुलेशन, वी आर जस्ट interested in knowing if we are creating an application or a hardware which for a particular application and that application requires the glow of LEDs to a particular level, then we can use these additional circuits, additional components so that our application need is satisfied. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एप्लीकेशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की जो तादाद है या कंपोनेंट्स हैं वो कम या ज़्यादा होते हैं। बेसिक सर्किट में तो आप इस चीज़ को नहीं प्राइमरली एड्रेस करते, लेकिन जहाँ एप्लीकेशन जो है वो फिर आपकी प्रोटोटाइप में या बिजनेस रेडी या सॉरी क्या कहते हैं प्रोडक्शन रेडी और बिजनेस के लिए सेल करने के लिए बना रहे हैं, तो फिर उसमें इन चीज़ों की जरूरत जो है ना वो पड़ेगी। मेडिकल के लिए बना रहे हैं, ये वो एरियाज है। पावर जैसे पावर कंट्रोल के लिए बना रहे हैं, तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे आपको एडिशनल सर्किट्स जो है ना वो लगाने पड़ते हैं। सिंपल जो है ना वो सर्किट जो है ना वो काफ़ी नहीं होते। ओके, अब इसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं और ये एप्लीकेशन पे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, okay, this is a circuit DC motor interface by using a Darlington pair. Okay, Darlington pair is used because Darlington pair is capable of converting the microampere signal to initially milliampere inside and then in ampere, in the order of ampere on the outside. So because its gain is very high, let's say 1000 as compared to a simple transistor, so that's why they are used to drive the desired level of current through a motor, because motor needs a lot of current. Usually they need current in the order of amperes, and also because motors can provide a back current in the circuit in the reverse order. So to protect this semiconductor device, there is a diode which is attached, so that the diode forward bias and reverse bias characteristic can be used in combination. तो हमारा सर्किट भी प्रोटेक्ट रहेगा और साथ साथ हमारा मोटर का ऑपरेशन जो है वो ना सिर्फ जिस डिजायर्ड वैल्यू में हम चाहते हैं वो चलता रहे, बल्कि साथ साथ उसके एडवर्स इफेक्ट जो है वो हमारे इस डार्लिंगटन पेयर को जो है ना वो खराब नहीं करेगा। ठीक है ना,
क्योंकि इसमें एक चीज जो हमने उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में जो है वो कहलाती है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन और जो इसके अलावा जो एवलांच इफेक्ट है और एक ब्रेकडाउन में आयोनाइजिंग इफेक्ट है, वो जो है प्राइमरीली सर्किट हमारी डिवाइस जो है ना उसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे फ्यूज उड़ जाता है ना, इसी तरह ये डिवाइसेस भी जो है ना बर्न हो जाती है, अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लॉस कर जाती है, फिर उनको रिप्लेस करना पड़ता है। ओके मुबशर, उम्मीद है कि आप ये थोड़ा अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है तो आप किताब में से ये रेलिवेंट पोर्शन एक दफा जरूर पढ़ेंगे। ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। नहीं सर। ओके, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सर सेशन में आपसे मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। सर आप कुछ पूछना चाह सर रहे ये हैं? एक मिनट में जी रिकॉर्डिंग सर ऑफ मैं कर देना। जी जी सर।